को लेकर बढ़ती दुश्मनी कहां रुकेगी? क्या भारत के सब्र का बांध टूट रहा है? विदेश मंत्री जयशंकर के बयान के क्या मतलब है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल एनएमएफ न्यूज पर। भारत अमेरिका के रिश्ते काफी खराब दौर से गुजर रहे हैं और इसका कारण ढूंढने का काम जारी है। लेकिन पता नहीं पेंटागन कुछ समझना क्यों नहीं चाहता और अब तो माहौल ऐसा हो गया है कि अमेरिका की काट ढूंढने के लिए काम जारी है। और इसकी झलक न्यूयॉर्क में तब देखने को मिली जब भारत के विदेश मंत्री ने दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में ये कहकर सनसनी फैला दी कि कोई ताकतवर देश भारत को झुका नहीं सकता है और भारत किससे क्या खरीदेगा और किससे क्या नहीं लेगा, इसको वो खुद तय करेगा, ना कि कोई दूसरा देश। और इसी बयान को अमेरिका से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जयशंकर ने सीधे तौर से सुना दिया है कि अब भारत क्या करेगा। इसके साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के समर्थन में खुलकर उतरे हैं और ऐसा बयान दिया है जिससे अमेरिका की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। रूसी राष्ट्रपति ने अपने एक ही बयान से अमेरिका के होश उड़ा दिए और जिसके बल पर अमेरिका उड़ रहा है उनकी भी नींद हराम कर दी। भारत पर अमेरिकी टैरिफ असफल रहेंगे। यूरोप के विपरीत भारत और चीन ऐसे राष्ट्र हैं जो आत्मसम्मान रखते हैं। भारत कभी भी स्वयं को अपमानित नहीं होने देगा। रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद सकारात्मक आर्थिक विकास को बनाए रखने का लक्ष्य रखता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत के समर्थन में अमेरिका और यूरोप को रूसी राष्ट्रपति ने जमकर क्लास लगाई है। इसी बीच जयशंकर के संयुक्त राष्ट्र में दिए बयान की भारतीय विशेषज्ञ अपना मतलब निकाल रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात ही नहीं रखते हैं बल्कि और भी द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं और अरबों के समझौते दूसरे देश करते हैं और संयुक्त राष्ट्र इतर बैठकें काफी होती है। उसी कड़ी में जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित किया, फिर फोरम पर जाकर अपनी बात रखी और कई समझौते को लेकर प्रयास किया गया। उसी कड़ी में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ के मंच पर जोरदार तरीके से भारत का पक्ष रखा और अमेरिका को खरी खोटी सुनाई। इसी को लेकर अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि जयशंकर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों का जोरदार समर्थन करते हुए नजर आए और सुरक्षा परिषद में बदलाव की वकालत की और कहा कि यूएन में भारत इसमें ज्यादा बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान ही उन्होंने BRICS और IBSA के देशों के साथ बैठक की। 10 बहुपक्षीय और 47 द्विपक्षीय वार्ताएं की है। मतलब अमेरिका ने जिस तरह से भारत विरोधी नीति अपनाई है, सरकार अब अपने वैश्विक सहयोगियों के दायरे का विस्तार करने लगा है और उसे और भी मजबूत करने पर फोकस कर रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत एक अलग दुनिया की तलाश कर रहा है और चाहता है कि अमेरिका सुपर हीरो जो बन रहा है वही दुनिया नहीं है। इसके अलावा और भी दुनिया है जिसके साथ रहकर एक अलग दुनिया बनाई जा सकती है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ को कवर करने गए पत्रकारों की माने तो संयुक्त राष्ट्र से अलग जयशंकर की इन बैठकों ने अमेरिका के कान खड़े कर दिए हैं और ग्लोबल साउथ पर उनका फोकस बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल नॉर्थ के देशों के साथ मौजूदा साझेदारी को और मजबूत करने का इरादा भी मजबूत किया गया है। इन बैठकों ने भारतीय विदेश नीति को विस्तार दिया है जो मौजूदा जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए भविष्य की रणनीति रखती है। लेकिन न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ की खास बैठक को वैश्विक कूटनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब भारत से पंगा लेकर अमेरिका ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है और एक नंगे भिखमंगे देश को अपनी गोद में बिठाकर अपनी ही परेशानी बढ़ा ली है। क्योंकि पाकिस्तान कर्ज पर जीने वाला देश है, ना ही अमेरिकी कंपनियां वहां कुछ कर सकती है और ना ही अमेरिका के साथ पाकिस्तान कुछ कर सकता है। क्योंकि जिसकी हैसियत नहीं वो क्या अमेरिका को फायदा पहुंचाएगा। 80 के दशक में अमेरिका से डॉलर पर डॉलर लेने वाला पैसा ले ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता, जबकि भारत अमेरिका के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर रहेगा और दुनिया के लिए काम करेगा। लेकिन पेंटागन को ये पसंद नहीं है। वो चाहता है कि भारत को कहे उठे तो वो उठ जाए और कहे कि बैठ जाए तो वो बैठ जाए। ये काम पाकिस्तान कर सकता है, भारत नहीं। क्योंकि अगर भारत रूस से तेल ले रहा है तो अमेरिकी कंपनियां भी तेल खरीद रही है। ऐसे में भारत गलत क्या कर रहा है? और अगर भारत गलत है तो चीन भी गलत होगा। तो चीन पर टैरिफ क्यों नहीं? इसी कारण अब भारत अमेरिका से सवाल कर रहा है, लेकिन अमेरिका समझने को तैयार नहीं। जानकारों का कहना है कि उसके अलावा भारत ने लैटिन अमेरिकी देशों के CELC और SICA ग्रुप समेत प्रशांत के देशों के FIPIC के साथ हुई बैठकों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर जो बैठक हुई वो अपनी तरह की दूसरी बैठक थी। इसके साथ ही वार्षिक G4 की भी बैठक हुई और G20 और IBSA में शामिल देशों के साथ भी बातचीत हुई। इसी को लेकर भारत और भारत के थिंकर गदगद है और कह रहे हैं कि ये भारत का कड़ा रुख है और ये सही है। हम यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में विदेश मंत्री S जयशंकर का भाषण सुनवाते हैं, आप सुनिए। Namaskar from the people of Bharat. We are gathered here 8 decades since the founding of this unique body. The UN Charter calls on us not just to prevent war, but to build peace. Not just to defend rights, but to uphold the dignity of every human being. It challenges us to stand as good neighbors, uniting our strength so that generations to come inherit a world of justice, of progress, and of lasting freedom. Madam President, forces unleashed by history since the founding of the UN propelled this body forward. As decolonization advanced, the world began to return to its natural diversity. The membership of the United Nations quadrupled, and the organization's role and remit grew significantly. In the era of globalization, its agenda evolved even further. Development goals took center stage, even as climate change emerged as a shared priority. Trade acquired greater prominence, while food and health access were recognized as essential to global well-being. Where security was concerned, the UN undertook peacekeeping operations and promoted disarmament discussions. As a result, the UN became a natural platform to debate key global issues. Madam President, we must ask ourselves today, how has the UN lived up to expectations? And just look at the state of the world. There are 2 significant conflicts underway, one in Ukraine and the other in the Middle East, West Asia. Innumerable other hotspots don't even make the news. The slow progress of the SDG Agenda 2030 presents a sorry picture. On climate change, the reality is of recirculated commitments and creative accounting. If climate action itself is questioned, what hope is there for climate justice? When a once-in-a-century pandemic hits us, we saw open discrimination in access to vaccines and to travel. Energy and food security have been the first casualties of conflict and disruption, especially since 2022. Better off societies insulated themselves by having the first call. The resource-stressed ones scrambled to survive, only to hear sanctimonious lectures thereafter. When it came to trade,
Non-market practices gamed rules and regimes. The resulting concentration exposed the world to leveraging. On top of that, we now see tariff volatility and uncertain market access. As a result, de-risking is a growing compulsion, whether from limited sources of supply or over-dependence on a particular market. Economic concerns have other dimensions as well. Heightened technology control is one. The grip on supply chains and critical minerals is another. The shaping of connectivity is no less sensitive. Protection of key sea lanes has become a challenge. Restricting the evolution of a global workplace is an issue. Each makes a compelling case for more international cooperation, not less. But are we really headed in that direction? And where has the UN actually made a difference? Madam President, as members of the UN, we meet here as sovereign equals. That is not a formalism, but a recognition of the inherent diversity of our world. Understandably, we have different history, traditions, heritage, and culture. For them to coexist, for them to enrich each other, it is imperative that we foster understanding and respect. This will only happen when we resist political interference and economic pressures, when narratives are free of prejudice, when double standards are abjured, and when pluralism is truly appreciated. Madam President, Excellencies, while asserting our rights, we must also firmly face up to threats. Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance, and fear. India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice.